A very good morning to everyone. I, Dr. Somesh Kumar, Country Director, Japaigo, would like to welcome you all to this informative and interactive session on the occasion of World Toilet Day. Session is titled as Voices from the Field, Valuing Toilets and Building Resilience for Sustained Sanitation Behavior. As a brief introduction to myself, I am a global public health practitioner and have a couple of decades plus of working experience in India, Sub-Saharan Africa, and Southeast Asian countries. Each year, the World Toilet Day calls on the global community to do more to address the sanitation crisis. As of 2019, an estimated number of upwards of 450 million people in India suffered the indignity of defecating in open due to a variety of reasons, lack of access to toilets and lack of utilization of toilets. Further, 4.2 billion people are still living without safely managed sanitation across the world. And we say we are living in the 21st century. And this talks about the inequities to basic sanitation and hygiene across the world and in our beloved country. At the time of COVID-19, when the world is fighting a terrible pandemic, the need for good hygiene and sanitation practices is more important than ever. As health, clean water, hygiene and sanitation practices continue to be the priority of India, it becomes imperative to promote good health and hygiene practices and to talk about accessibility of toilets for all. World Toilet Day celebrates toilets and raises awareness of the people living without access to safely managed sanitation. This year's global theme, Valuing Toilets, provides us an opportunity to inform, educate, and to inspire action to tackle the sanitation crisis. To initiate with on the topic, the impact of poor sanitation on vulnerable population and way forward, we have with us Ms. Sangeeta Patel, Senior Foreign Service Officer and Director, Health Office, USAID, India. Further, we have with us Ms. Anjali Ravi Kumar, Global Sustainability Director for Health and Wellbeing with Unilever. She covers the thematic areas of WASH, mental health, disasters, and nutrition, and she'll discuss sustainable sanitation solutions for urban India and its impact specifically on gender. We also have Dr. Sanjeev Jha, Director, India Sanitation Coalition, FICCI. He will be discussing with us about engaging communities and community influencers towards sustainable behavior change for sanitation. I would also like to welcome my colleague my co-moderator for the session, Dr. Anuradha Jain, Technical Advisor, Health System Strengthening, USAID, to this session. She will be moderating the second part of the session of this webinar. This webinar is different and it stands out as we have voices from the field to share experiences from the ground. Let's begin this webinar with a special message from the Health Minister Nagaland on collaborative approach to enhance sanitation coverage. This will be through a video from the Honorable Health Minister of Nagaland. Can we please have the video, please? Everyone, it is my pleasure to be a part of this important webinar on account of World Toilet Day. This is an extremely important topic which is very closely related to health for all. Nagaland has registered significant health progress over recent decades. The state has the lowest infant mortality rate in the country at 7 per 1,000 live birth as per SRS May 2019. In its efforts to reach all villages,
The state is presently boosting to revitalize village health sanitation and nutrition. These at Ayushman Bharat Health and Wellness Centers and collaboration with allied departments like the BMMVY and Posan Abhiyan under Social Welfare, NRLM under Rural Development, School Education, PHED. The government in the past has also partnered with private sector companies to collaborate towards sustainable development by focusing on drinking water and sanitation to help improve the overall quality of life of the households in Nagaland. The Public Health Engineering Department of Nagaland, under the Water and Sanitation Support Organization, also implements sanitation program and conducts ample seminars and workshops, particularly in convergence with the Northeast Anesthetic Development Agency and the Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry to educate the masses on the importance of goal of good community health. More impetus has been given to sanitation sector with the launching of the Soros Bharat Mission, Clean India Mission by the Honorable Prime Minister of India during October 2014. We have realized that intervention aimed at enhancing sanitation coverage can only be designed and adequately implemented if they are the product of multi-stakeholder efforts, bringing together governments, but also civil society organizations, the private sector, development partners, and academic institutions. Within each of these stakeholder groups, the voices of women and girls must also be heard and heeded. Better collaboration increases the number of perspectives and the likelihood of success. We have recently collaborated with USAID, NISTA, and Unilever for promoting healthy hygienic behaviors. Further, we need to look at investment and innovations to triple progress for all along the sanitation chain, from toilets to the transportation, collection, treatment of human waste to reach Sustainable Development Goal 6. Governments must listen to the voice of people who are left behind without access to toilets and devote specific funds to involve them in planning and decision-making processes as part of a human rights-based strategy. The public and commercial sectors must collaborate with underdeserved areas to develop long-term sanitation solutions that are beneficial to them. Looking beyond 2030, unsustainability can emerge as the main challenge if
the wash interventions being implemented are not done. Considering integration as a key pillar. In view of this, with support from USAID, NISTA, and Unilever, we are leveraging health and wellness centers platform to integrate wash interventions for promoting healthy hygiene behaviors. Further, I foresee that cross-sectoral and private partnerships are one of the key roads of any successful wash intervention. Partnerships and collaborations are not only going to be the underlining factor of success, but they are going to form the basis for the both 2030 goals that will be set. I wish the best to all the participants and may God bless us all. Thank you. Huge thanks to the Honorable Minister for those very pertinent and meaningful remarks. I especially took the message of the need for the cross-sectoral collaboration and the role of partnerships to make a meaningful impact in this space. And this webinar is all about those partnerships with USAID, with the different organizations represented here, and the government and the Unilever. So thank you, Honorable Minister, for that. Now, I would like to request Ms. Sangeeta Patel, Director, Health Office, USAID, India, to throw some light on the impact of poor sanitation on vulnerable populations, and any remarks on how should we go about addressing this deep and hairy problem going forward. Over to you, Ms. Sangeeta. Thank you so much, Dr. Somesh, and thank you as well, Honorable Minister from Nagaland. I think that I really just stand, in front of you and really exclaim the importance of World Toilet Day. I think for me, what is really prominent is when we look at the global statistics, it is just a shame, because we recognize that we are in a difficult situation already with COVID. And then layered upon that, we have so much that is happening today in the world in terms of inequities and inaccessibility. And when it comes especially to safe water and access to drinking water, or even basic hand washing and sanitation facilities, so much of the population is left out. 3 billion people globally have no access to, the basic hand washing facilities, and 6 in 10 people lack access to proper sanitation, as well as really just the sheer necessities of being able to keep themselves safe and keep their families protected, especially from disease, and ultimately really to be able to contribute to their own economic growth. We know that in this vicious cycle, children especially are differentially impacted. When a child is born in poverty, and especially when they're under 5, in those first few years, having limited access to sanitation and water really impacts even their own livelihood. They won't survive. And unfortunately, the unsafe disposal really of human excreta and feces contributes not only to diarrhea, to intestinal worm infections such as hookworm, as well as roundworm, but also accounts in India alone for 1/5 of all deaths that are occurring for children under 5 years in India. That's 535 deaths that could be prevented. For me, that causes great concern, because we know we've got to be able to partner and work together, especially to avoid that.
We've got to find cost-effective ways, not only to be more strategic, but also to work with the private sector, as you've just heard of, even in Nagaland with Unilever and Japaigo Nishta, as well as the state government, but also in terms of advocacy. If I think in terms of even sensitization, really, there's so many folks that are differentially impacted. And when we think in terms of the words of the Honorable Minister, the critical importance and necessity in this equation is really involving the most vulnerable and marginalized. If we don't work with communities and we don't hear the voices of women who are differentially impacted, or even children, and involve them in our planning, our design, and our execution, we'll be lost, because we'll be designing programs that don't take into consideration their needs. So I think most of all, when we think in terms of universal health coverage, and we think in terms of Swachh Bharat and even Ayushman Bharat and the principles that have been outlined by Prime Minister Modi, it all comes down to really being able to ensure that people can have basic rights: access to sanitation, to safe water, to access to primary health care through the health and wellness centers, and hopefully access to be able to enrich their own lives and their households and their communities. It's these kind of partnerships between civil society, between government and the private sector, that are critical, especially to be able to launch a movement that's needed to institute the changes that are necessary to see reforms that currently aren't always occurring as evenly as we need them. So I would say that for reliable water and sanitation services, not only in facilities, but also in communities, we've got to work together with them. We've got to hear their voices, and we've got to make sure that we're working with local government that is indeed concerned and willing to act on those concerns. And I think here, especially in Nagaland, you're seeing that already, especially through the partnership with the Honorable Minister, and especially with Nishta on the ground and Unilever, and of course your own healthcare facilities, Ayushman Bharat, and especially the school and health and wellness centers and program. I certainly hope from the USAID end that I speak not only of the commitment that's made by our own administrator to be able to partner across the globe. Since 2008, I can tell you that we've invested more than 53 million, at least invested in resources that have supported more than 53 million people to improve their access to water. And definitely by 2022, the USAID has set goals to provide at least 15 million people with sustainable access to safe drinking water services and 8 million people with sustainable access to sanitation services. As the Health Office Director for USAID India, I am deeply concerned and certainly appreciative of this partnership, and really looking forward to how we can contribute to the advocacy that's needed, not only at the household and community level, but even at the local government and state level, to be able to transform the situation. I think we've seen already, whether it's toilet ek prem katha, with at least actors like Akshay Kumar, or even here in India with others such as yourselves. Together we can create a movement, and we've got to create the momentum necessary not only to fulfill Swachh Bharat and Ayushman Bharat, but also really access to basic fundamental rights that should be accessible to all families. Thank you so much. USAID is a proud partner in this venture, and certainly looks forward to continued close coordination, not only with Nagaland, but also with Nishta, as well as Unilever. Thank you. Thank you, Ms. Sangeeta. I think if there is any problem in global health that perpetuates inequity, this is one of those, especially as it impacts, the really vulnerable populations. So thank you for elevating the dimension of inequity in this whole domain of clean water and sanitation. Maybe I'll just quickly follow up with a small question. You brought out the differential impact on certain population groups, the children, and the women. So would you have any thoughts on how
within this 450 million in India or even the 3 billion globally, how do you design interventions to reach and reduce the impact on these more vulnerable subpopulations within the larger population? Any thoughts on that, Ms. Sangeeta? Thank you so much. I'd have to really borrow, sir, from the JPIGO program, as well as the work that's already undergone and in the communities. I think that if there's one thing I've learned from going out to the field and actually visiting the projects, and especially being in the communities myself in the gaon. Agar hum gaon mein nahi jate hain, if we don't listen to the communities, if we don't actually hear the voices of the children themselves, whether it's in a school setting or outside of it, if we don't talk to the families, if we don't, as our Honorable Health Minister mentioned from Nagaland, if we don't incorporate these voices into our planning, will be lost. I think that I learned this especially through the work definitely that's undertaken, especially through the Nishta program. You always have the people, the hearts of the communities close to really all of your programming. And I think that's what we've learned, not only from the USAID end in our partnerships at the state level, but especially with the communities. There's no sort of momentum or change in behaviors that will occur if we just work in an isolated bubble and decide in a vacuum, hey, this is what's going to work best for this community. It's going to be really the children, the citizens, especially women who are differentially impacted, and their voices that are going to help us transform the kinds of programs that we design for them. And I think certainly in this partnership moving forward, especially with the collaboration through JPIGO Nishta, through the state government of Nagaland, and especially at the local government level, we have a wonderful partnership with Unilever and especially with schools to really get the message out. And frankly speaking, even through the schools to parents, to households, to communities. It's going to be that circular thinking that will help us then protect really what's most at stake, which is ultimately safe water, safe hygiene, safe sanitation for those that are the most vulnerable. And that equity concern, it never dies from my end. It's only when we embrace equity, when we say this is a fundamental right, that people should not only have access to primary healthcare, comprehensive services, but also just basic water and sanitation. Until we can break those barriers, listen to communities, actually use the resources that are accessible, not only through the government of India, but the private sector, USAID and its partners, working together with one direction, one goal, we won't get there. But I think when we take into consideration these voices, we won't go wrong. And it'll need to be bi-directional, even after we implement. We're going to need to hear from those same voices to check in and say, hey, are we doing this right? Does it make sense? And if not, what do we need to change? Thank you. Yeah, no, thank you so much. And now these days, thankfully, the movement of human-centered design and engaging the communities in design of not only interventions, but programs as a whole is gaining traction, and thank God for that. Hopefully that can really land the interventions where they are needed the most. So thank you, Ms. Sangeeta, for those very insightful remarks. Now we go over to, we have Ms. Anjali Ravi Kumar, Global Sustainability Director for Health and Wellbeing, Unilever, to discuss about sustainable sanitation solutions for urban India and its impact on women and the differential role differential impact that it has on vulnerable communities within India. So over to you, Ms. Anjali Ravi Kumar. Thank you, Somesh. And thank you so much to the panelists as well for their insightful comments. And thank you to USAID and JPIGO for having us at this webinar. It is a very special occasion
and I would say the right one to be talking about Unilever's Suvidha model. What I'm going to try to do is I'm going to try to take you on a whistle-stop tour, so very fast overview of what Suvidha is and how it serves communities and how it has potential to serve urban communities across India. So Suvidha is really a model for affordable urban community sanitation. Could we move on, please? And the reason why Unilever really started working on Suvidha is because as a company, Unilever is among one of the leaders in thinking about embedding sustainability into core business. So we don't actually have a CSR department. We only have, we make sustainability the responsibility of every business, brand, and function. And we've made a commitment to help 1 billion people improve their health and well-being every year, in addition to commitments around livelihood and environment. Move on, please. And we are very conscious of the fact that by 2030, 1 in 4 individuals on the planet will live in an informal urban settlement. The number of people living in urban areas could be closer to 50%, that is 1 in 2. But of that number of 50% of the world's population in urban areas, 50% will actually be living in informal urban settlements. And how do we reach this population with water, sanitation, and hygiene services? It's a very tough problem to crack. So in Bombay, we have had a long history of leveraging community toilets, but still, current services don't reach everyone. 5 million people don't have latrines at home. So we have a mix of providing individual toilets as well as community toilets, and yet the gap is enormous. The pressure on existing facilities is only increasing as more and more people come into the city. And this sort of, as a company that is in at the core, we are a hygiene company. Unilever began with a product that killed germs, a soap, Lifebuoy, many of you will know it, was designed to defeat cholera in the United Kingdom. So as a company, we have hygiene and good health at our heart. And we recognize that in urban informal settlements, this is a big challenge because people don't have facilities. I mean, to use, where do they wash their hands? Where do they use toilets? So we studied the problem, and if you could just move on, please. And we really came up with a solution that is holistic, and we knew it had to be designed to be affordable, sustainable, and scalable. So these were our sort of, you can say, guiding principles. And we started with a center in Ghatkopar, and let me talk you through the partners involved in the next slide. The partners involved in Suvidha are a wide array, and they each bring unique competencies and contributions to the project. The government, of course, is a key partner, and none of this could have been possible without a tremendous support from the Municipal Corporation of Greater Mumbai, MCGM. HSBC has been, again, a fantastic corporate partner. HSBC and HUL have pooled funds to build Suvidha. United Way and Pratha are our NGO partners, and they bring in enormous community understanding, liaising with, because every slum in Bombay is different. As you know, Bombay has many Indias within it, right? So every slum in Bombay is different. Every community is different. Their needs are different. Their issues are different. Their sanitation problems are different. And of course, the sewage connection issue is different. The level of pressure on existing facilities is different. So all of that local understanding is brought by United Way and Pratha. And then we have a range of partners who are technical in nature, but provide various components of our system, because this is a very large facility. So you can move on. 5 Suvidha centers are operational across Mumbai slums: Ghatkopar, Kurla, Andheri, Govandi, and Malad. If you could just move on, please.
And what do we do? How do we build a Suvidha center? We identify existing community toilets, and typically you'll know that these are poorly maintained facilities. Very few of us would actually want to use a community toilet unless absolutely in like dire straits, there is no other toilet to use. Even though these are paid for services, they're not in any great condition to use. What we do is we identify such facilities, we actually break them down, providing backup facilities, and we construct a brand new Suvidha center. And I'm going to reveal what is special now about a Suvidha center. If you can move on. Today, I should let you know about 100,000 people benefit from Suvidha services every year. And that Suvidha is a holistic model, including access and behavior change. If you could just move on. But this is really the heart of what makes Suvidha special. It is not just about toilets. It's about holistic wash services. We provide clean toilets and hand washing facilities. Yes, that's the bare minimum of what a Suvidha center does. It provides purified drinking water at an affordable price. And we know that today getting drinking water cans is a very expensive proposition for most households, and you cannot afford to. And there is a challenge with maintaining, water purity levels in the pipes that serve slum communities, if at all they reach homes directly. Convenience of the washing machine facilities. As you know, among domestic water usage, it's actually washing clothes that absorbs that requires the most intensive use of water. And unless you have a steady source of water, it's a huge challenge. And we have effectively solved that problem for communities by providing an affordable laundromat facility within the Suvidha center. And of course, there are showers for bathing. And what you see here are this is the pricing for all of the services. As you can see, highly affordable for urban slum dwellers who are very often working in jobs that pay between say 8 to at least even sometimes even as high as 40,000 rupees a month. They could be Uber taxi drivers, they could be Ola cab drivers, they could be watchmen, they could be people who work in our homes. So it's not like you're not catering to a working population. It's just that real estate in our cities is so unaffordable that the only option they have for reasonable rent is in informal slum settlements. So this is an aspiring class of people who live in urban settlements, and who want and in fact need to go to work with fresh clothes every day. Therefore, this mix of facilities is not just aspirational, it's necessary for their continuing employment in the city. Can we move on, please? So these are just a few photographs of how we've planned the toilet facilities in the Suvidha center. You can see a mix catering to men, women, children. Very importantly, often children get missed out in the mix of providing toilet facilities. So we have specially designed toilets for children, senior citizens, and persons with disabilities. Again, a marginalized group within the whole sanitation spectrum. Let's move on. And we have special facilities for your drinking water, as we've described. It serves like a water ATM. There's a special laundromat and shower facilities. These are some photos. And just to move on, I think here's where design comes into play and catering to specific groups. We know that women hesitate from using community toilets because they're afraid of getting molested, getting raped. These centers are not well lit at night generally. So we've taken that into account. We have extremely well lit centers. We provide a panic button in the ladies' toilet that connects to an alarm system. So this is one of the key concerns, and this prevents women from going to the toilet at night, for instance, that, cascades into health issues later. So really important to design, keeping your various constituencies in mind. Let's move on. Affordable to all. We are very sensitive to the fact that this, communities are seeking value. They're willing to pay, but they're seeking value. And we found that this mix of services is what is essential to helping
to helping each Suvidha center be financially sustainable. In fact, I think one of the key problems with community solutions today in urban areas is that they are only focused on toilets. And while the willingness to pay for toilets is there, it's not self-sustaining. And to really make it self-sustaining, you need to think of a holistic wash solution. Let's move on. And you'll be glad to know that water saving is really at the heart of the design of the Suvidha Center. All our centers have treatment facilities, and we're even exploring the option of black water treatment so that it becomes a closed loop for water. There is no question that you cannot build any of this in a community without a deep engagement with the community. And therefore, we have, along with the construction of every Suvidha Center, comprehensive behavior change campaign. And just as Sangeeta was talking about, you really need to go home to home, go to schools, go to urban Anganwadi centers, speak to doctors, and you really need to invest behind that. Just to flash the kind of, if you can move on, at the end, we have a couple of testimonials from various groups. If immediately after this slide, these are some of the creatives. Let me just, you could spend a second here to say that these are the different kinds of impacts that Suvidha Center users report. What is not in this deck is impacts on self-esteem, impacts on dignity, but those are also being captured as we speak. And if we move on, there are a few testimonials that I'd like to leave you with. I'll end here for questions. Thank you, Anjali. Absolutely fascinating to hear the success of the Suvidha model and how you have taken the client into as the center of your design strategy. So just wanted to follow up with a quick question. And this is a problem that is very close to the government, and government is leading the whole effort in India for increasing the access to sanitation and hygiene facilities. And thankfully, we have partners, private partners like you, who are coming in a major manner. Can you elaborate on how the public and private coming together, in partnerships can really amplify the impact of their individual investment, so to speak, and efforts that and I'll request you to keep it brief. Sure. Just to, I totally understand. I think what's really important and the heart of public-private partnership success is not to look at it in terms of investment alone or money alone. We're really looking at pooling competencies. And the private sector brings certain competencies. In this case, in the case of Suvidha, HUL has a tradition of innovation and tradition of coming up with innovative business models, innovative products. So we have innovation, we have project management capability, we have sourcing capability. A lot of the costs for Suvidha are brought down because we have such a strong procurement and sourcing capability, right? And public sector, while it can procure, it can't procure before it is proven, let's put it that way, or before the decision to scale has been taken. So we have enormous capabilities on the private side, and on the public side, the MCGM knows Bombay extremely well. They understand where this can work. The NGOs on ground bring so much local understanding and sensitivity, how to speak to different communities. As I mentioned, Bombay is not a single, it represents so many Indias, there's so many languages spoken in each slum. How do you cater to each one's, the differences in, expectations and issues for each community? So it's about pooling competencies rather than just pooling funds. Funds is actually the easy part. No, absolutely. Complementary competencies are the need of the hour, and we are seeing that impact through multiple examples. Thank you so much for your very insightful remarks and bringing out the Suvidha model example and explaining the role of partnerships. So moving on to discuss about engaging communities and community influencers
towards sustainable behavior change for sanitation. We have with us Dr. Sanjeev Jha, Director, India Sanitation Coalition, FICCI. I kindly request Sanjeev you to please initiate your remarks. We are running slightly behind, so if kind request if you could keep it brief. Again, just for that. Sure, thanks. Yeah. So Somesh, this is short. I think I have got about 5 minutes, 5 to 6 minutes. Yeah. Great time. Yeah. So I'm not going to dwell upon what IC does and the institution I represent. So I'll come straight to the topic. Valuing toilets and building resilience for sustained sanitation behavior is the topic that we are deliberating today to commemorate the World Toilet Day. Very topical and extremely relevant to phase 2 of the current Swachhta missions, both SBM rural, SBM urban. And in this session, I've been asked to focus on engaging communities and community influencers towards sustained behavior change for sanitation. Interesting. And let me begin with an elaboration of the topic and separate it into its constituent elements, which is important. So a particular area or place considered together with its inhabitants is how we may like to define a community, and influencers or leaders are essentially the ones who come from it. And this engagement with community is with a purpose, which is to trigger the community to shun a behavior and adopt a set of new behaviors to reap benefits that might accrue due to a change in behavior. And let me bring in open defecation here, of which India has declared itself free in 2019 itself. See, participatory approaches at the community level have proved to be effective in changing sanitation behaviors and encouraging toilet adoption in rural Bangladesh, India, Zimbabwe, Ethiopia, and a host of other countries. And then a community-led total sanitation, which is abbreviated as CLTS, is one example of a participatory approach developed in Bangladesh in the year 2000 to change sanitation behaviors in communities, specifically to end open defecation, whose success actually led to its adoption in communities of Asia and Africa. In India, we used a CLTS approach, albeit with a difference. Here, we've had a subsidy or the incentive money, which was paid to each eligible household on constructing a toilet and then using it and not defecating in the open. It worked much against the experts' prediction, who thought that the incentive might work only as a deterrent to the adoption of the right kind of sanitation behavior. Let me elaborate quickly. CLTS adopted certain tools and techniques and features like disgust and shame to trigger communities to realize that open defecation causes them to ingest each other's fecal matters and create risks to the health of the whole community, and to take action to end it. In India, it worked, but not much. The health benefits were associated with safe sanitation, evident, no doubt about that. And many of us in India were already aware of it. Yet, it wasn't enough to nudge people to stop defecating in the open. Ladies and gentlemen, what mattered in India most was the descriptive norm, which was created with the efforts of all those who designed and implemented SBM, especially in the rural settings of India. It began from a certain number of households post a CLTS triggering, and then slowly yet steadily, with efforts of all those who conducted these communication campaigns, more and more people started adopting the right kind of sanitation behavior. And that was to not defecate in the open. It's a matter of pride to have associated with the largest behavioral change program that led on to India becoming free from the menace of open defecation. Whereas it was great that India declared itself open defecation free 2 years ago now, yet providing adequate access to sanitation facilities did not end when on-site technologies were built, twin pits and septic tanks under Swachh Bharat mission.
So SDG target 6.2 to achieve access to adequate and equitable sanitation was accordingly upgraded to include the safe disposal of the off-site treatment of excreta to secure an ODF environment in the strict sense of the term. And this clearly meant additional resources and a time frame to achieve these newer objectives, and more importantly, an exhaustive community engagement and participation to ensure that treatment projects under the mission are completely owned by the community. See, now the last thing, that community engagement and ownership is paramount to success of the mission in its current phase is amply demonstrated by cases, some of which, if time permits, I would like to briefly touch upon. Else, I'm happy to take questions. Thank you. Thank you, Dr. Sanjeev, and maybe we'll come to you for questions after we go to the second half of this session. Sure. And thank you so much for bringing out the role of participatory learning approaches and the role of behavior change communication through those participatory approaches to really make the whole movement move definitively forward. So with that, I thank all the panelists for their very insightful remarks, and I would hand it over to my dear colleague, Dr. Anuradha Jain, who leads the Health System Strengthening Division within the USAID India. Over to you, Anuradha. Thank you, Somesh, and I must thank the panelists for a very, very insightful discussion. You know, right from the Suvidha Kendras to the community involvement to Sangeeta's very, nice mention of Toilet, a Prem Katha, a wonderful movie by Akshay Kumar. And nonetheless, what Sanjeev just spoke about community engagement is a good segue into what we are going to discuss now as part of the what here from our colleagues from the field. The whole purpose of this very webinar would be defeated today based on the theme. And the value of toilets and building resilience and social determinants adding to the health outcomes is no news to anybody over here. The panelists know about it. But what is more important is what does the community think about it, and especially our elected leaders who are there. What is their view of engagement? How do they consider, or how do they visualize engagement is something very important to understand for us, because based on that, our messaging of the future would be decided. So without taking much time, and let me invite for today's deliberation, Sarita ji. Now I will switch over to Hindi because I believe a lot of our community people would be happier listening to me in Hindi. तो सरिता जी आपको मैं इनवाइट करती हूँ, आप आए और अपना विचार हमारे से बांटे। सरिता जी, सरिता बघेल जो हैं वो एक सरपंच हैं पिछले 2 साल से बालीजोरा सीतापुर छत्तीसगढ़ से। और सरिता जी, जैसे हम जानते हैं कि आपने बहुत अच्छा काम किया है उस इलाके में, वहाँ के लोकल चैलेंजेस जो हैं उनसे निपटने के लिए, टॉयलेट के खास तौर पे जो चैलेंजेस रहे हैं गांव में, आपने बहुत सारा काम किया है। तो अब आपसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप प्लीज आएं और अपने विचार प्रकट करें और हमें बताएं कि आपने अपने इलाके में क्या क्या किया। धन्यवाद जी। सभी को मेरा जय जोहार। आज इस चर्चा में मुझे शामिल करने के लिए मैं सभी की आभारी हूँ। मैं श्रीमती सरिता बघेल, ग्राम पंचायत बिलजुरा, सीतापुर छत्तीसगढ़ में सरपंच के रूप में लगभग 2 साल से कार्यरत हूँ।
स्वच्छता एक अच्छी आदत है जो हम सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। इस टॉयलेट दिवस के उपलक्ष्य में मैं आप सभी को बताना चाहूँगी कि हमारे गाँव में शौचालयों का निर्माण हमारे समुदाय के लोगों के लिए जीवन में बहुत फ़ायदेमंद रहा है। पहले खुले में शौच आम बात थी, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में लोगों ने स्वयं को खुले में शौच ना करने की आदत विकसित कर दी है। आज लगभग 70% लोग शौचालयों का उपयोग करते हैं और लगभग सभी महिलाओं ने अपनी सुरक्षा के लिए शौचालयों का उपयोग करने लगी हैं। महिलाएं मासिक धर्म के दौरान टॉयलेट का सबसे ज़्यादा यूज़ करती हैं और उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहा है। पहले गांव की महिलाएं कपड़ों का इस्तेमाल करती थी, जिससे उन्हें स्वच्छता से संबंधित कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। हालांकि अब भारत सरकार के कई प्रयासों के दौरान स्थिति में बहुत ज़्यादा सुधार आ गया है। मैं खुद एक महिला सरपंच होने के नाते गांव में महिलाओं के लिए सैनिटरी नैपकिन वितरित का भी प्रयास करती हूँ, ताकि वे स्वच्छता का व्यवहार रख सकें और उसका पालन कर सकें। इसके अलावा बहुत मैंने गाँवों में अपने बाहर से जाने वाले जितने भी लोग हैं, उनके लिए सामुदायिक शौचालय का मैं निर्माण करवाई हूँ। इसमें गाँव एक स्वच्छ के रूप में उभर कर आया हुआ है, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हालांकि चुनौतियों में से एक बात ये भी है, जो बहुत ज़्यादा अहम है, वो यह है कि शौचालय में स्वच्छ बहते पानी निरंतर आपूर्ति की कमी से बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि शौचालयों का प्रयोग पूर्ण रूप से तभी हो सकता है जब भविष्य में शौचालय का उपलब्ध के साथ पानी की भी उपलब्धता हो। केवल शौचालय बनाना ही हमारे लिए काफ़ी नहीं है। तो अगर हमारे साथ भारत सरकार ने इतना अच्छा किया है कि हर गांव में शौचालयों का निर्माण करवाया है, तो यही दरख्वास्त है उनसे कि अगर नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ योजना आता है और स्वच्छता के रूप में रहता है, तब साथ में पानी की उपलब्धता ज़रूर ही कराएं, क्योंकि आज भी लोग बहुत ज़्यादा बाहर ही जाते हैं, जो इस चीज़ों को हमें सोचने और समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गांव में स्वच्छता के लिए सुनिश्चित करना होगा कि कुछ शौचालयों का उपयोग करने की आदत आज बन गए हैं, वे सफलतापूर्वक उचित शौचालयों का और स्वच्छता का व्यवहार अपनाएं। और हम इसी आशा के साथ एक दिन आने वाले समय में 100% लोग टॉयलेट का पूर्ण रूप से यूज़ करें और अपने ग्राम को एक स्वच्छ ग्राम के रूप में, आदर्श ग्राम के रूप में हम उभार सकें और पूरे गांव को हम रख रखाव कर सकें। इसके लिए हमें ज़रूरी है कि इस आदत को पूरे गांव वालों के बीच में और पूरे जितने भी देश के लोग हैं, इस चीज़ों को समझना पड़ेगा। जैसे हम एक फिल्म भी आई थी, वो गांव में सब देखे और उनसे काफ़ी घर की महिलाएं काफ़ी उनसे इंस्पायर हुए कि एक प्रेम कथा टॉयलेट की कहानी है टॉयलेट। आज उसे देख करके बहुत सी गांव में महिलाएं हैं, सबसे पहले जो है गांव में, तो सबसे पूर्णतः हमारे वह पूर्ण रूप से स्वच्छ रहेगा।
इस चर्चा लास्ट में मैं यही कहना चाहती हूँ कि इस चर्चा में आमंत्रित करने के लिए मैं फिर एक बार आप सभी को धन्यवाद करती हूँ और आप लोगों की आभारी हूँ। मैं इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद सरिता जी, आपने बहुत अहम मुद्दा उठाया कि सिर्फ ज्ञान देने से कुछ नहीं होगा या टॉयलेट बनाने से कुछ नहीं होगा, उसको इस्तेमाल करने के लिए बहुत जरूरी है कि पानी जैसी सुविधाओं का इंतजाम भी किया जाए वहां पे। और बहुत अच्छा संदेश देके जा रही हैं आप हम सबको, और हमारी बहनों के लिए खास तौर पे इसकी जरूरत सबसे ज्यादा है, ताकि वो अपनी जिंदगी इज्जत से जी सके, जो कि उनका राइट है। इसके बाद यहाँ से इस पूरी विवेचना को आगे ले जाते हुए मैं इनवाइट करूंगी मिस्टर देवीदास किसान निमजे, जो एक सीनियर प्रोग्राम मैनेजर हैं समर्थन सेंटर में, और उनसे जानना चाहूंगी कि अभी सरिता जी ने हमारे से एक रिक्वेस्ट किया कि पानी भी जरूरी है, टॉयलेट भी जरूरी है, राइट भी जरूरी है हर इंसान का। इन तीनों चीजों को ध्यान में रखते हुए क्या आप हमारे साथ अपने कुछ विचार बांटना चाहेंगे कि आप एक सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन के रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो आपको क्या लगता है कि इस इंटरसेक्टोरल कन्वर्जेंस के ऊपर क्या किया जा सकता है, आप क्या कर रहे हैं, कैसे आप इसको और मदद कर सकते हैं ग्रामवासियों को इसको इम्प्रूव कराने में, सरकारी संस्थाओं को साथ लाने में, प्रोग्राम्स को साथ लाने में। तो देवीदास जी कुछ प्रकाश डालें इस बात पे। धन्यवाद। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सभी को नमस्कार करता हूँ, और आज विश्व शौचालय दिवस है। सबका हार्दिक अभिनंदन भी और शुभकामनाएं भी। और आज महत्वपूर्ण दिवस पे हम लोग खासकर जो हमारे जीवन से, हमारे बहनों से और हमारे बच्चों से जुड़ी हुई जो स्वास्थ्य और स्वच्छता की बातचीत हम कर रहे हैं, काफी महत्वपूर्ण है। और लगभग हम पिछले 2 साल से देख भी रहे हैं कि जब से कोविड आया है तब से हमारी हाथ धुलाई की जो व्यवस्था है, जिसकी मांग है, लगातार बढ़ रही है। हम लगातार गांव में कह रहे हैं कि आसपास में स्वच्छता रखिए, घर में स्वच्छता रखिए, अपनी बाथरूम स्वच्छता रखिए, शौचालय की सफाई रखिए। और अलग अलग समय में जो पहले की तुलना में आज हम करें कि आप निरंतर हाथ धुलाई की जो आदत है वो बढ़ाइए। सवाल यह आता है उसके बाद कि जब हम लोग कह रहे हैं कि व्यक्ति के अंदर जो हाथ धोने की आदत है हम धीरे धीरे जरूर बढ़ाएंगे, पर एक बैरियर समुदाय के भीतर दूसरे तरह के तैयार होते हैं कि जहां हाथ धोने की हमें जरूरत है वहां क्या उसकी व्यवस्था है क्या नहीं है। जिस शौचालय में हम जाते हैं क्या शौचालय इस्तेमाल करने के बाद निरंतर पानी आ रहा है। जिस स्कूल में जाते हैं हम लोग, उस स्कूल में क्या कोविड अनुकूल बच्चों के लिए हाथ धोने की अलग अलग व्यवस्था है या का पानी है। अब ये जो व्यवस्था है उसमें जो संसाधन की कमी है या संसाधन सही तरीके से आपस में मिल नहीं पा रहे हैं, उसकी वजह से जो गैप आ रहे हैं वो आ रहे हैं। अक्सर हम लोगों ने कई बार ये भी देखा है स्कूलों में कि वहां पे टॉयलेट बन गया, पाइप का नल लग गया, पर पाइप का नल लगने के बाद पानी का कनेक्शन नहीं हुआ, तो सब कुछ होने के बाद भी वहां पानी नहीं पहुंचता है। तो कहने का मेरा ये अर्थ है कि हमें अगर हम चाहते हैं कि समुदाय स्तर पे कोविड से बचने के लिए या उनके जीवन में बदलाव लाने के लिए एक स्वस्थ स्वच्छ व्यवहार होना चाहिए और वो निरंतर रहना चाहिए। हम लोगों को थोड़ा इसमें एक संपूर्ण स्वच्छता या संपूर्ण एक समग्र रूप से सोचने की जरूरत है। हम वर्तमान में ये देख रहे हैं कि स्वच्छता के लिए, पानी के लिए, शौचालय के लिए, सफाई के लिए अलग अलग तरह की करीब 10 से 12 स्कीम चलती है। अलग अलग स्कीमों में अलग अलग तरह का पैसा भी है। उनकी सबकी अपनी प्लानिंग की जो साइकिल होती है वो अलग होती है। नरेगा ये कहता है उनका टाइम अलग होता है प्लान करने का, जल जीवन मिशन उनका टाइम अलग होता है प्लान करने का, जीपीडीपी जो होता है उनका टाइम अलग होता है प्लान करने का। ऐसे ही सेक्टरल और डिपार्टमेंट होता है, उनका टाइम होता है अलग अलग करने का। उस वजह से क्या होता है कि अभी जल जीवन मिशन ने ये कहा है कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत जो सरपंच महोदय का सवाल था वो बेसिक है। अब जल जीवन मिशन के अंतर्गत कहा है कि घर घर तक हम पानी पहुंचाएंगे, नल की व्यवस्था हो जाएगी। पर पानी के नल के कारण जब पानी की वृद्धि होगी और जब हमारा गंदा पानी बढ़ने लगेगा, अब गंदे पानी के प्रबंधन के लिए जल जीवन मिशन के अंतर्गत कन्वर्जेंस की बात की गई है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत उसके लिए सीधा पैसा नहीं है। फिर हम लोगों को अभी नरेगा से बातचीत करनी पड़ेगी,
या जीपीटीपी से बातचीत करनी पड़ेगी, या अन्य जो वहाँ पे सेक्टरल स्कीम होती है या उस डिस्ट्रिक्ट में या उस क्षेत्र में या वो राज्य में, उसके लिए हमें बातचीत करनी पड़ेगी। वो बहुत जरूरत है, क्योंकि अभी हम गाँव में जाते हैं और हम बातचीत करते हैं, हमें समझ में आता है कि नल तो लग गया है, परंतु भी गंदा पानी का जो उत्पादन हो रहा है उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं हुई। दूसरा सवाल इसमें एक ये है जो हमें ध्यान देने की जरूरत है कि जैसे अलग अलग विभाग है, अलग अलग योजनाएं हैं, वैसे ही उनकी जमीनी स्तर पे क्रियान्वयन करने वाली अलग अलग संस्थाएं भी है, अलग अलग समितियां हैं, अलग अलग समूह है, अलग अलग नोडल विभाग है। अब जो स्वास्थ्य विभाग के साथ, एनएचएम के साथ बीएचएनसी काम करती है, उनका भी काम है कि वो अपने विभाग से जो अपने बीएचएनसी का पैसा होता है सोख्ता गड्ढा बनाते हैं। नरेगा भी है, नरेगा की अपनी समिति है, नरेगा भी सोख्ता गड्ढा बनाता है, उनकी भी अपने लोग हैं। उसी तरीके से पंचायत भी अपना पंचायत पैसा होता है, तो उनका अपना जीपीटीपी का प्लान होता है, उसमें भी स्वच्छता के काम होते हैं। सारे लोग अलग अलग है, तो कई बार क्या होता है कि आपस में समन्वय नहीं है, आपस में बातचीत नहीं होती है, उस वजह से एक ही तरह के काम अलग अलग योजना में वो अलग अलग व्यक्तियों द्वारा किए जाते हैं। एक उदाहरण हम लोगों ने खुद देखा हुआ है कि एक हैंडपंप खराब है। अब हैंडपंप खराब है, उसको दुरुस्त करने वाला जो मैकेनिक है, अब मैकेनिक को चाहिए केवल चेन दुरुस्त करने के लिए 200 या 300 रुपए। अब उसकी निगरानी करने वाला जो व्यक्ति होता है उसी वार्ड का वार्ड पंच होता है या उसी पंचायत के सरपंच महोदय होते हैं, पर दोनों में आपस में बातचीत नहीं होने की वजह से जो केवल 500 रुपए के लिए जो हैंडपंप दुरुस्त हो पाता है वो कई दिनों तक बंद रहता है। तो कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि जमीनी स्तर पे अलग अलग विभाग से समुदाय के अलग अलग जो लोग हैं, सब लोग मिलकर जब एक सूत्र में बातचीत करेंगे तो इसका रास्ता हल निकलेगा। तीसरी बात जो मैं महत्वपूर्ण कहना चाह रहा हूँ कि भारतीय संविधान ने जो 73 जो अमेंडमेंट किया और उसके तहत जो हमारी पंचायत राज व्यवस्था स्थापित हुई है, उस जो सरपंच महोदय आप उसके गणमान्य प्रतिनिधि है, ये उसके अधिकार है कि सभी विभाग, सभी लोग सबके साथ बैठ के हम लोग गांव के विकास की चर्चा करें और गांव के विकास के लिए एक समेकित कार्य योजना बनाएं, जहां कन्वर्जेंस भी हो, जहां अलग अलग तरह के लोग भी आ रहे हो, जहां अलग अलग तरह के हमारे टेक्निकल लोग भी आ रहे हो और बातचीत। तीसरा मामला ये है, मैं ये कहना ये चाह रहा था कि अभी जैसा अभी शौचालय का मामला है, ओडीएफ प्लस प्लस में हम जाने लगे हैं। ओडीएफ के दौरान जो शौचालय में हमारी दिक्कतें खड़ी हुई है, डिफॉल्ट टॉयलेट्स हमारे बने हुए हैं, तो आने वाले समय में सेफ सैनिटेशन, फीकल स्लज मैनेजमेंट की दिक्कतें अभी गांव में भी धीरे धीरे बढ़ने लगी है कि अभी वो खाली कैसे होंगे। इसलिए हम लोगों को टेक्निकल कैडर हम किस तरह से डेवलप करेंगे गांव में, जो समझे कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट क्या है, जो समझे कि नल को रिपेयर करने की जरूरत कैसे होगी, जो समझे कि अभी जो टंकी खाली करने के बाद उसका डिस्पोजल व्यवस्थित तरीके से कहाँ से होगा, इसके भी टेक्निकल कैडर की जरूरत पड़ेगी हम लोगों को। और इसका टोटल एक मैनेजमेंट का जो जिम्मेदारी और निगरानी की जिम्मेदारी टोटल एक पंचायत राज व्यवस्था है, जो ग्राम पंचायत लेवल पे है, जो जनपद पंचायत लेवल पे है, जो जिला पंचायत लेवल पे है। उनकी एक संविधान ने दी हुई अपनी एक व्यवस्था है, सारे विभाग के साथ मिलकर उसको क्रियान्वयन करेंगे। इसमें मैं जो कह रहा था कि एक आखिरी वाला जो हिस्सा महत्वपूर्ण होता है कि गांव हमारा है, पानी हमारा है, हैंडपंप हमारा है, और इसका उपयोग हमारी महिलाएं करती है, इसका उपयोग हमारे बच्चे करते हैं। अब इसके जो स्वामित्व की भावना है कि मैं इसका मालिक हूं या समुदाय इसका मालिक है, और मालिक होने के नाते अगर उसका समझेगा और उसको अगर हम लोग नियोजन करेंगे और उसको हम खुद लागू करेंगे, उसको खुद चलाएंगे, तो डेफिनेटली चलेगा। ऐसी कई समुदाय हम लोग जानते हैं कि जहाँ शौचालय बनने के बाद उनको पानी की जरूरत पड़ी तो उन्होंने अपना पैसा, ग्राम पंचायत का पैसा, जिला पंचायत का पैसा मिला के उन्होंने एक ग्राम पंचायत सिवनी है जिन्होंने घर का नल कनेक्शन दिया हुआ है, और पिछले 4 सालों से वो नल कनेक्शन वो अपना रेगुलरली खुद ही महिलाओं के नेतृत्व में ऑपरेट कर रहे हैं। तो ये आसान है, मिलके उसको आगे बढ़ना पड़ेगा। तो बेसिकली ये जो अलग अलग कन्वर्जेंस की जो बातचीत में कर रहा था, अलग अलग सेक्टर्स के लोगों को साथ में लेकर आने की एक सस्टेनेबल हेल्दी हाइजीन बिहेवियर और उस तरह से संसाधन निर्माण करने की, चलाने की जो बातचीत कर रहा था, इसका एक मॉडल जो है, जो जसपुर और सरगुजा जिला है उसमें करीब 101 ऐसी ग्राम पंचायत, 101 ग्राम पंचायत है, गांव है, जहाँ पे एक प्रयोग किया जा रहा है। और ये प्रयोग बेसिकली निष्ठा कार्यक्रम है। उस निष्ठा कार्यक्रम के अंतर्गत जपाएगो है, यूसेड है और यूनिलेवर का सपोर्ट है। समर्थन उसको जमीनी लेवल पे पंचायतें और जिला पंचायतें और विभाग और अलग अलग समुदाय के जो नेतृत्व करता है उनके साथ मिलकर उसको एक प्रयोग करने की कोशिश की जा रही है साथ में मिलके, और कोशिश करेंगे कि ये समुदाय के साथ मिलके उसको थोड़ा आगे बढ़ाए। और मुझे बोलने का आपने मौका दिया, मैं आपको बहुत
धन्यवाद देवीदास जी, आपने तो बहुत ही ज्यादा विशेष पहलुओं पे हमारा ध्यान लाया है, और इंटरसेक्टोरल कन्वर्जेंस और किस तरह जमीनी स्तर पे लोगों का साथ आना, पॉलिसी रिफॉर्म की जरूरत होना, कि सबकी प्लानिंग एक साथ हो, जमीनी स्तर पे लोग एक साथ बैठ के बातें करें, और एक साथ कैसे इन चीजों के बारे में डिसीजन होना चाहिए। छोटे छोटे काम जो कि सिर्फ एक दूसरे से बात ना करने की वजह से रुक जाते हैं, बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट चीजों पे आपने ध्यान दिया है, और हम उम्मीद करते हैं कि जो कार्य आप कर रहे हैं यूएसएड निष्ठा की मदद से, उससे आप एक मॉडल स्थापित करेंगे इन गांवों में, और जो कि पूरा देश शायद उनसे सीख पाएगा, कर पाएगा। तो आभारी हैं आपकी इस विश्लेषण के लिए। थैंक यू सो मच आने के लिए और हमें बताने के लिए इन बातों को। और अब मैं थोड़ा सा ध्यान लाना चाहूंगी कि जब वॉश की सुविधाएं बहुत जरूरी हैं गांव स्तर पे, उनका प्लानिंग मॉनिटरिंग करना बहुत जरूरी है, उसी के साथ साथ हेल्थ डिपार्टमेंट का योगदान, ताकि वो लोगों को ये बता सकें कि क्या जरूरी है, क्या गैर जरूरी है, क्या किए बिना बीमारियां बढ़ सकती हैं। ये सब भी बहुत इम्पोर्टेंट एरिया होता है होलिस्टिक हेल्थ अप्रोच के लिए। और इसके लिए जो गेस्ट हमारे साथ आज हैं, जिनको मैं बुलाना चाहूंगी, वो है रश्मि जी। रश्मि पांडे इंदौर से आती हैं। इंदौर में धर्मपुरी ब्लॉक है जहां वो काम कर रही हैं, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर हैं और हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पे काम करती हैं। आपका बहुत बड़ा रोल है रश्मि जी। आप वैसे भी बैकबोन बनने जा रही हैं देश की, क्योंकि आप एक सीएचओ हैं और आप जमीनी स्तर पे सबसे ज्यादा पास हैं लोगों के, सबसे ज्यादा आप उनको केयर प्रोवाइड करेंगी। और आयुष्मान भारत तो वैसे ही प्रधानमंत्री जी का फ्लैगशिप है। तो आपसे सुनना चाहेंगे कि आप इसमें कैसे अपना योगदान देती हैं। तो रश्मि जी बताएं हमें। थैंक यू। थैंक यू मैडम। सबसे पहले तो मैं आज टॉयलेट दिवस की शुभकामनाएं सभी अधिकारियों को, अपने सभी वरिष्ठ अधिकारियों को देना चाहती हूँ। सबसे पहले मुझे यहाँ बुलाने के लिए मैं टीम निष्ठा, यूसैड और यूनिलीवर को धन्यवाद देना चाहती हूँ, और प्राथमिक स्तर पर स्वच्छता की स्थिति को उजागर करने की अनुमति देने के लिए मैं मॉडरेटर साहिबा को भी आभारी हूँ। मैं रश्मि पांडे, SWC धर्मपुरी ब्लॉक सावेर, डिस्ट्रिक्ट इंदौर, मध्य प्रदेश में कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के पद पर कार्यरत हूँ। जैसा कि हम जानते हैं कि महात्मा गांधी जी ने कहा था कि स्वच्छता स्वतंत्रता से भी ज्यादा जरूरी है। स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र SWC सभी स्वास्थ्य संबंधित प्रश्नों का उत्तर देने के लिए संपर्क का पहला बिंदु है। हम अक्सर इस विषय पर चिंतन करते हैं कि वह क्या चीज है जिससे लोगों का व्यवहार बदलता है। क्या हम सामाजिक दबाव से व्यवहार बदल सकते हैं, या फिर इससे भी कुछ ज्यादा किया जा सकता है? यह हम सबके लिए एक बहुत बहुमूल्य सवाल है। स्वच्छता हमें मानसिक, शारीरिक, सामाजिक और बौद्धिक हर तरीके से स्वस्थ बनाता है। हम सभी जानते हैं कि कोविड-19 महामारी है। महामारी के दौरान लोगों को स्वच्छता के बारे में जागरूक करने की आवश्यकता को और अधिक महत्व मिला है। हम हमारे सेंटर में विभिन्न प्रकार की स्वास्थ्य सुविधा और विभिन्न प्रकार के प्रोग्राम, सेलिब्रेशन और दिवसों के माध्यम से समुदाय के सदस्यों को स्वच्छ व्यवहार को बढ़ावा देने वाली गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। बात करते हैं शौचालयों की। लोगों को शौचालय बनवाने और इसका इस्तेमाल करने के लिए तैयार करना जितना महत्वपूर्ण है, उतना ही चुनौती भरा है हम सबके लिए। जैसे कि डायरेक्टर और अपने सरपंच साहिबा ने, सभी लोगों ने हमें बताया, स्वच्छता की कमी के चलते हमारे क्षेत्र में कई महिलाओं को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जो कि हम सभी को स्वीकार नहीं है। महिलाओं को RTI, UTI और HPV संक्रमण के संपर्क में आने का खतरा हमेशा बना रहता है। हम CHO के रूप में युवा लड़कियों को सैनिटरी नैपकिन के उपयोग और उनके आसपास एक स्वच्छ वातावरण बनाए रखने के बारे में सलाह देते हैं। उनके आसपास स्वच्छता सेवाओं की कमी से मासिक धर्म सामग्री का अनुचित उपयोग होता है।
शौचालय की सुविधा, यहाँ तक कि एक सार्वजनिक शौचालय में उचित निपटान प्रणाली की भी कमी कई महिलाओं को अपने जैसे मासिक धर्म के कपड़े को एकांत में धोने और सुखाने से रोकती है, यहाँ तक कि उन्हें पहनने के लिए भी मजबूर करती है। लंबे समय तक एक ही कपड़े को कई बार इस्तेमाल करने की वजह से कई स्वास्थ्य जोखिम का सामना भी करना पड़ता है उन्हें। हम अपने SWC के द्वारा कई महिलाओं के घर तक पहुंच के उन्हें सही सैनिटेशन और हाइजीन की जानकारी उपलब्ध कराते हैं। हेल्थ केयर सर्विसेज के साथ साथ उनके मानसिक स्वास्थ्य का भी पूरा ख्याल रखा जाता है। हम महिलाओं को प्रोत्साहित करते हैं कि यदि वे किसी भी बीमारी का अनुबंध करती हैं तो तुरंत मदद ले, ताकि गंभीर अवस्था में पहुंचने से पहले ही हम उन्हें उनका इलाज किया जा सके और एक सही समय प्रणाली पर हम उनके बीमारी को रोकथाम करके और उन्हें काउंसलिंग प्रोवाइड करके सही समय पर रेफरल सुविधा प्रोवाइड करते हैं, ताकि उन्हें सही समय पर उनकी उचित सुविधा और व्यवस्था उन्हें मिल जाए और उसका इलाज सही समय पे उन्हें मिल जाए। ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता और पोषण दिवस के माध्यम से, जो कि हम प्रत्येक मंगलवार शुक्रवार को VHND और VHSNC का हम आयोजन करते हैं, इनके माध्यम से हम ग्रामीण स्तर पर गर्भवती महिलाओं, माताओं और बच्चों के स्वास्थ्य, स्वच्छता और पोषण की स्थिति में सुधार के लिए सभी तरीके की सर्विसेज प्रदान करते हैं। हम आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और आशा समुदाय की महिलाओं के साथ स्वास्थ्य शिक्षा सत्र का भी आयोजित करते हैं, जिसमें हम AVAIDS के भी माध्यम से और हमको भारत सरकार ने लैपटॉप दिया है, उसके माध्यम से उन्हें वीडियो के जरिए और अनेकों प्रकार के काउंसलिंग और हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, जिससे उन्हें काफी शिक्षा और नॉलेज का ज्ञान होता है। हम जानते हैं कि शौचालय के निर्माण को नहीं बल्कि उनके अधिक इस्तेमाल को लक्ष्य बनना चाहिए। इससे समाज की कई चुनौतियों से एक साथ लड़ा जा सकता है। इस महत्वपूर्ण चर्चा का हिस्सा बनने के लिए और मुझे आमंत्रित करने के लिए मैं एक बार फिर टीम निष्ठा, जापाइगो और यूनिलीवर टीम को और मेरे सभी वरिष्ठ अधिकारियों को धन्यवाद देना चाहती हूँ। सभी दृष्टिकोणों को शामिल करने से ही हम वास्तव में देश में शौचालयों और स्वच्छता को महत्व देना शुरू कर सकते हैं। मेरा मानना है कि हम बातचीत शुरू करने से ही स्थायी परिवर्तन हो सकता है। जितना हम लोगों से बातचीत करेंगे, उन्हें काउंसलिंग करेंगे, एक प्रोग्राम और एक्टिविटी के माध्यम से अवेयरनेस फैलाएंगे, उतना ही हमारा ये सारा एम जो है वो पूरा हो सकता है। धन्यवाद। धन्यवाद रश्मि, आपने बहुत बहुत इम्पोर्टेंट जाते जाते संदेश दिया है कि इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन या बातचीत, आपस में एक दूसरे को बताना, बात करना, पहली शुरुआत या पहला आगाज है किसी भी काम को पूर्ण करने का। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज दिया आज आपने हम सबको, और बहुत धन्यवाद करती हूँ जितना दिल के साथ आप सबने बोला, देवी दास जी आपने और सरिता जी ने। ये सुनने की जरूरत सबको है, और यहाँ बैठ के जिन नजरों से हम चीजों को देखते हैं और जिन नजरों से आप उन्हें टटोलते हैं, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। और ज्यादा नीड है कि आपकी आंखों से चीजों को देखा जाए, बशर्ते हमारे नजरिए से उन्हें टटोला जाए। तो धन्यवाद। और अब मैं बोलूं इसको प्रोग्राम को हैंड ओवर करूंगी मेरी कलीग कृतिका को। सो कृतिका, ओवर टू यू फॉर फर्दर डेलिब्रेशन। थैंक यू सो मच। Thank you, ma'am. Without taking much time, I'd like to propose the vote of thanks. So it's my privilege that I've been asked to propose a vote of thanks. And on behalf of Nishtha, I would really like to thank all our esteemed panelists, Sangeeta ma'am, then Dr. Sanjeev, Anjali, Ravi Kumar, for sharing their opinions and making this a very insightful session. I'd also like to take a moment to thank our Honorable Health Minister Nagaland, who, despite his busy schedule, has shared a short video recording and shared his opinions on this very important topic. And I'd also like to thank our Sarita ji, Devidas ji, and Rashmi ji for bringing forward the real on-ground experiences and realities. And thanks a lot, Dr. Somesh and Dr. Anuradha, for moderating this session so well.
Thank you, everyone, and thank you for all the participants for taking out time and being with us today. Thank you.